Assalamu alaikum class. I have just briefed you in the Zoom session about our subject project HR and communication. This is our lecture number 1, and again we will start from the very basics of management. And in the first 2 lectures we will discuss the basics of management, we will discuss the basics of project, we will discuss the basics of human resource management, and then third lecture and onward we will discuss in detail the different topics related to the project HR and communication. But of course our main focus will be on the HR and communication management with relevance to the project management, how we can manage the human resource and communication with regard to the any project. Let's have a brief introduction of myself. My name is Dr. Arshad Zahir. I did my MBA in 1999. Then I did MS E-Commerce and then MS Engineering Management from CASE, that is Center of Advanced Studies in Engineering. They first time offered the degree in Engineering Management. These are the two different disciplines. What is the one is the engineering discipline, the other one is the management discipline. So they first time offered the degree in engineering management. That was a very popular degree all over the world. But in Pakistan, I think CASE was the pioneer who offered this degree in MS Engineering Management. So management subject is so important that everyone is doing, management degree, whether they are the engineers or the doctors or the lawyers. So I did my MSc Engineering Management from there, and finally I did my PhD in 2009. I have different published papers in international as well as national journals, and most of them are impact factor journals also. I am PhD and MPhil supervisor and external reviewer in the local universities, almost all the universities in Pindi Islamabad region. I have impact factor journals publications in the different journals, as I told you. Then I have 3 books and monographs at my credit. I have also different articles in the different edited books. I have attended different national and international conferences. Some of the international conferences I attended there in USA, in Austria, in Turkey, in Sri Lanka, Bangladesh. I arranged different workshops and training sessions, mostly locally at the different universities and different institutes like Army institutes, Air Force institutes. I have about 18 to 20 years administrative experience in private sector as well as in the public sector, and for the last say 10 to 12 years I have been in touch with this profession, and recently and for the last 4 to 5 years I am teaching at this MS and PhD level. My area of interest are of course management, business process engineering, research methods. Then I used different softwares and conducted training in the different softwares like SPSS, AMOS and VPLS also. So class, this is my brief introduction. As most of class students are future scientists and engineers, let me give you an example of Albert Einstein. He's a legend scientist. एक उसका वाक्य मैं आपसे शेयर करूंगा इंसिडेंट, उसके बाद हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे. अल्बर्ट आइंस्टाइन जो था जब 8 साल का था, तो जब स्कूल से वापस आया तो एक उसके प्रिंसिपल ने उसको लेटर दिया अपनी माँ को देने के लिए. He gave a letter to give to his mother. जब वो लेटर was sealed, जब वो लेटर अपने प्रिंसिपल को दिया उसने, तो अपनी माँ को दिया, तो वो लेटर जब उसने माँ ने खोला और उसको पढ़ा तो उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए. तो उसने आइंस्टाइन ने अपनी वालदा से पूछा कि क्या वजह है, आप क्यों रो रही हैं. नाउ ये बड़ा इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है, तो इसको ज़रा गौर से देखें. उसकी माँ ने उसे कहा कि मेरे रो में इस वजह से रही हूँ कि आज आपके प्रिंसिपल ने मुझे लेटर लिखा है आपके बारे में कि जो आपका बच्चा है वो बिल्कुल जो है बड़ा जीनियस है
और इसमें बहुत सी ऐसी बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं और हम इसको हैंडल नहीं कर सकते, तो इसकी आप परवरिश करें। ही इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। तो उसके बाद उसने उसको स्कूल से जो है छुड़ा लिया, क्योंकि उसके प्रिंसिपल ने लिखा था कि इसकी खुद आप परवरिश करें। खैर किसी और स्कूल में उसको उसने एडमिशन दे दिया उसकी माँ ने, और खुद उसकी परवरिश स्टार्ट की ना। उसके बाद कुछ अर्से बाद उसकी डेथ हो गई उसकी माँ की। और आफ्टर 40 ईयर्स 30 ईयर्स वो आइंस्टाइन बताता है कि एक दफ़ा उसने घर चेंज करना था, तो पूरा घर की पुरानी चीज़ें निकली। तो उस पुरानी चीज़ों में से एक लेटर भी निकला जो मिट्टी से भरा हुआ था। उसने उसकी मिट्टी शट्टी साफ़ की। ये वही लेटर था जो उसके प्रिंसिपल ने उसकी माँ को 40 साल पहले दिया था। अब ये वो टाइम है जब आइंस्टाइन बड़ा फेमस हो गया था, एंड ही वाज द वर्ल्ड नाउन साइंटिस्ट, लेजेंड साइंटिस्ट। उसने बड़ी हैरानी के साथ, खुशी के साथ उसको दोबारा खोला कि ये वही लेटर था। जब उसने लेटर को देखा तो वो उसने पढ़ता गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए अगेन। अब उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि ये जो आपका बच्चा है, उसकी माँ को जो उसने मुखातिब किया हुआ था, आज आपका जो बच्चा है बहुत ही नालायक है, और इसको इस वजह से हम सस्पेंड कर रहे हैं अपने स्कूल से। लेकिन माँ ने उसको बिल्कुल उल्टा बताया। तो सिर्फ ये एक जो कंक्लूजन है या इसकी जो बेस पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था कि आप एक यू कैन डू द वंडर्स इन लाइफ। ठीक है, हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत होती है, और यू शुड ऑलवेज नोन योर सेल्फ। अब अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई एक सलाहियत रखी होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू रिकग्नाइज योर सेल्फ कि व्हाट यू कैन डू इन द लाइफ। तो इसको हमेशा कोशिश करें। और ये मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है इन चीज़ों के बारे में भी बताता है। हम तो ज़ाहिर है इसके जो बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, बट मैनेजमेंट आल्सो guide you to how to motivate the people, how to spend your life, how to manage the people most importantly। तो ये एक साइंटिस्ट, क्योंकि आप मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह फ्यूचर के साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर्स होंगे, तो ये एक आइंस्टाइन का मेरे पास आ रहा था किस्सा, तो मैंने कहा आप लोगों से मैं शेयर करूं। Let's briefly discuss the outline of today's lecture. We will define the management, as the title of this subject is Principles of Management. So first of all, we will define the management and why management, why it is important. देन पोस्टकोप एक एब्रीवेशन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ल्यूथर गोलीक एक थ्योरिस्ट था जिसने सबसे पहले मैनेजमेंट को डिफाइन किया था, एंड ही यूज दिस वर्ड एब्रीवेशन टू डिफाइन द मैनेजमेंट। वी विल डिस्कस दिस वर्ड पोस्टकोप। We will discuss the very basic concept, very important concept, that is productivity. We will briefly discuss about planning, that what is planning and what is the purpose of planning. But we will discuss this planning concept in detail in some future lectures. In today's lecture, we will also discuss some important concepts related to management. So in that sense, our today's lecture is very important because we will discuss very basic concepts of management. And in the future lectures, all of these concepts will be used. So each of you should note down, should have the paper and pencil with you, and please note down the important concepts. I will also ask the questions during this session, and you'll have to answer in the comments session so that I can have the idea that you are listening carefully to the lectures. So this is a brief outline of today's lecture. Now let's define what is management. There are the different theorists who have defined the management in the different ways. But there was a theorist, just I told you earlier, whose name was Luther Golik. When he defined the management, he gave this abbreviation, POSCOPE. And what is meant by POSCOPE? These are the different activities of management actually. That is planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, reporting and budgeting. ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसने डिफाइन की थी कि मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, these are sort of concepts which have so many activities, and all of these activities are important. When Luther Golik defined this management, he gave us this abbreviation, that is POSCOPE. Let me formally define this word management. Usually when I define management, I usually say that management is a scientific study. Management is a science. There's a lot of debate about management. Some theorists say that management is a science,
while the others said that management is an art. But there is a general consensus among the different theories that management is also a science. Now this is a very important concept. इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे what is science and why management is the science. If we see the different departments in the different universities, you will see that the name of the department usually the Department of Management Science. It means management जो है that is also a scientific discipline like physics, chemistry, mathematics. Management is also a science, but why it is a science we will just discuss because there are so many important characteristics of science. We will discuss it why management is the science. So management is the scientific study which is concerned with the different activities. What are those activities? Planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, reporting and budgeting. When Luther Golik defined this word management, he gave us this abbreviation POSCOPE. He said that there are the 8 activities of management. Then some scientific management theorists came and they said that there can be the 4 activities of management. Some theorists said that there can be the 30 years of activities of management. And you know, there can be the hundreds of the activities of management. But when Luther Golik defined it, he said that these are the most important activities of management, that is planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, reporting and budgeting. And what is the purpose of the management? Why do we need to management? That is to achieve the predetermined objectives of the organization. And what are the predetermined objectives of the organization? Okay, you know that the basic objective or the primary objective of any organization, and most importantly the business organization, is to maximize the profit. So that is the very basic and primary objective of any of the business organization. So along with the profit maximization, all organizations are interested to minimize the cost. So profit maximization along with the cost minimization so that we can achieve the productivity. Now that is another very important concept we will discuss in the upcoming slides. Okay, what is productivity? So basically the predetermined objectives of the organization are to earn or maximize the profit with the cost minimization so that we can achieve the productivity. So this is a very basic definition of management. Now let me repeat this definition again. Management is a scientific study. Why science? I will just discuss. It is concerned with the different activities like POSCOPE, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, reporting and budgeting in order to achieve the predetermined objectives of the organization, that is profit maximization, cost minimization, so that we are able to achieve the productivity. So that is the very basic definition of management. Usually when we define the managers, we can define the manager that manager is a person who knows how to take work from others. That is very important. So management basically train us that how to take work from others. And always एक मेरी चीज़ याद रखें, it is very difficult to take work from other people. But this is the management who tells us that how you can take the work from other people. That's why the management skills, managerial skills are so important for everyone. I just told you in order to occupy the topmost position in the organization. So if you are a good engineer and you have the good managerial activities, that will be the extra advantage and that will enable to occupy the topmost position in your future. So important is that management subject. So management is the process of getting things done. As I told you earlier, sometimes we define manager is a person who knows how to take work from others. So we'll have to get the things done effectively and efficiently. Now these are again two very important concepts which I will discuss in today's lecture. That is efficiency and effectiveness through and with other people. So every manager wants to get things done efficiently and effectively. Now let me define these two important terms, that is efficiency and effectiveness. Now efficiency means doing the things correctly, and it refers most importantly to the relationship between the inputs and outputs. As I told you earlier that one of the basic or predetermined objective of management is to achieve productivity.
And productivity is actually the combination of, one of the way we can define the productivity as the combination of efficiency and effectiveness. So let me tell you about the efficiency. Efficiency is actually related to the resources. If you are able to achieve something or to do something, do something, you'll have to look at the resources, that how much resources you have used. If you have used the minimum resources, it means you are efficient. Now, what are these resources? For example, time is a very important resource. If you have completed a task in less time, it means you are efficient, because time is a very important resource. Similarly, human resource, if you have done something or you have achieved some goal by by using the less manpower, less people, then you are efficient, because you have used your output, or you have gained your output with the minimum resources within time or with the less people. Similarly, energy cost, human cost, economic cost, capital cost. If you have used all of these resources in an optimal manner, uh, and you are able to achieve your output, it means you are efficient. So again, let me repeat about the efficiency. Efficiency is related to the resources. If you are able to achieve some task with the minimum resources, you are efficient. Similarly, less time with less human resource, with less machinery, with less capital, with less energy cost, it means all of these things are related to the efficiency. Now let me talk about the effectiveness. Effectiveness is another important concept which is usually discussed in a relationship to that efficiency. Efficiency means doing the things, goal attainment. Basically, effectiveness is related to the quality of output. That what you have achieved, what is the quality of that achievement? What is the quality of desired output? Well, whether you have achieved the output with the desired quality or not. So, quality of desired output is the effectiveness. So again, I'm repeating, efficiency is related to the resources, effectiveness is related to the output. If you are able to achieve the desired output with the required quality, with the minimum resources, it means you are productive. Again, I have linked both of these concepts with the productivity. And now one of the way to define the productivity is the combination of efficiency and effectiveness. Again, I'm repeating, productivity is the combination of efficiency and effectiveness. If you are efficient, not effective, you will not be productive. If you are effective, not efficient, you will not be productive. You will be only productive if and only if you are efficient as well as effectiveness. So both of these are actually the components or the determinants of productivity, which is the basic primary objective of any organization. So we can define the productivity in two ways, and one of the way to define the productivity is that it is the combination of efficiency and effectiveness. So every manager wants to complete their task with efficiency and effectiveness. Let me give you an example of efficiency and effectiveness. If I say to some carpenter to make the different tables, say 4 to 5 tables in 5 days, but he finished his work in 4 days. So we will say that he's efficient because he has completed his work uh, in less time, lesser time. So he's efficient. But that task is completed. But if the quality of tables is not there, he will not be effective. ठीक है? तो क्वालिटी भी होनी चाहिए और उसकी एफिशिएंसी भी होनी चाहिए. The productivity is the combination of efficiency and effectiveness. Again, this is one of the way we can define the productivity. Another way to define the productivity I will discuss in the next slides. That is the ratio of the output over input. That is the ratio of output to the input. So actually the output is denominator part of this equation, that is related to the effectiveness, and its denominator part, that is the input, that is related to the efficiency. Input means resources, which I discussed when I was defining that efficiency. So these are very important concepts. Now I think you should be clear about the difference between efficiency and effectiveness, and you have the idea about productivity.
And these are the very important concepts which should be on your fingertips, and I will use these concepts and again, and I think it should be clear what is the efficiency, what is effectiveness, and what is productivity. So again, efficiency means resource usage. If you want to be efficient, you'll have to minimize the wastages. You will have to optimally use your resources. Okay? If you are able to achieve your output with the minimum resources, it means you are efficient. Similarly, effectiveness is related to the ends. Ends means output of the product, that is the quality of output. So goal attainment is linked to the effectiveness, and if the quality is there, it means your effectiveness is there. Effectiveness is being increased, and if you are able to achieve this quality or output with the minimum resources, it means you are also efficient. So this is the ultimate goal which the most of the managers are looking for. Okay? They want to minimize their resources, their wastage of the resources, and they want to attain the high quality output. These are the ultimate goals of any of the managers or management. So let me formally define this productivity. Productivity is a relationship between the outputs generated from a system and the inputs that are used to create those outputs. So as I told you earlier, that there are the two ways we can define the productivity. Productivity is the ratio of the output to the input. That is one of the way we can calculate the productivity. In the next, I think, third or fourth lecture, I will give you the examples. We will calculate the productivity. We can calculate the productivity of the machinery. We can calculate the productivity of human beings as well. So we will do some exercise that how we can calculate the productivity. But the basic idea behind productivity definition is that it is the ratio of output to the input. And I also told you that there is another way we can define the productivity, that is combination of efficiency and effectiveness is the productivity. And I just told you that effectiveness part is related to the numerator of this equation, that is the output, and the denominator part is related to the efficiency, that is the input. So efficiency is related to the input or the resources, and the output is related to the effectiveness. So in that way, the productivity is linked with the output, with the input, with the efficiency and effectiveness. So what happens in the productivity? We may have the different inputs in any organization, in any factory, in any company. We can have the land. The different inputs may include land. People are the most important resources or the inputs. We can have the capital, facilities, equipment, tools, machinery, energy, materials, information. All of these are the inputs which are used to produce the outputs. In between the inputs and outputs, there is a transformation process, and after transforming the input, we will have the final outputs. So in final output is related to the effectiveness, and that is the quality required by the customers. Effectiveness is the quality of output, and this is the quality which is actually demanded by our customers, and the input is related to the efficiency. So this is the way I just told you that this is a system concept in which productivity is linked with these inputs, efficiency, and finally outputs or the effectiveness. Now, productivity improvement, we will do some calculations in our next lectures about productivity. It is the result of managing and intervening in transformation or work processes, and this productivity improvement or productivity will increase when you can see on the slides. If the output is increased and your input is decreased, it means you are producing the high quality output, but you are using the minimum resources. It means the productivity will increase. Similarly, if your output is increased, the quality of output is increased, or the production of the output is increased, but your input remains constant or your resources remain constant, again the productivity will increase.
Then what is the third way you can increase the productivity? If your output is increased with a greater ratio, your input is increased but with a lesser ratio, again the productivity will increase. If your output remains constant and your input decreases, again the productivity will increase. And what is the fifth way? If your output is decreased but with the lesser ratio as compared to the input, again the productivity will be increased. So whenever we are working as the managers in the organizations, as I told you, the ultimate objective of any of the manager is to improve the productivity. So I just gave you the idea of productivity and how this productivity concept is related to the efficiency and effectiveness, and what are the general ways I am talking about in a very broad sense. We will specifically discuss this topic in the next lectures, that how and what are the ways through which we can improve the productivity within the organizations. So increase in productivity, that is the basic challenge before all the managers, before all the organizations. As I told you, that productivity is a ratio of output, goods and services divided by the inputs, resources such as labor and capital and the human resource and the other similar resources. And the ultimate objective, or the primary objective, or the predetermined objective of any of the organization is to improve the productivity. If any organization is able to improve or manage their productivity, that will be, termed as the successful organizations. So production, there's a difference between production and productivity. Production is just related to the output, that is the measure of output only, and not a measure of efficiency. But productivity, as I discussed earlier, that is the the component of both efficiency and effectiveness, or the output. So production is only the part of the productivity. Sometimes there is a misperception between the production and productivity, that these are the same things, but as I told you, you can see in these slides that these are the different concepts. Production means just output, but productivity means both output and the efficiency, that is the ratio of the output to the efficiency. So these are the productivity and efficiency and effectiveness, and these are the basic management concepts. I'm hopeful that all of these concepts must be clear. Now, what factors can affect the productivity? As I told you, that quality, that is the basic component of productivity. If your quality is not there, your productivity will be affected. No doubt how much efficient you are. If you are not producing the quality products or services, it means you are not effective. So quality is a very important factor which can affect your productivity. Your management style is again very important. And again, as I told you earlier, that one of the basic function of the management is to improve the productivity. If the management function is not there to manage the productivity, it means that your performance, your organizational performance will be badly affected. Similarly, capital resources are important. Capital resources, machines and the other tools and the other scientific equipments which are important, which are used to produce the outputs, they are important. Similarly, technology is another important factor which is important and related to the productivity. So all of these factors, there are many other factors, but all of these are the important factors which can affect the productivity within any organization. So as I told you earlier, that productivity is the ratio of output to the input. That is the units produced over the input used. That is the way we can calculate the productivity. Measure of process improvement, it represents output related to input. Only through the productivity increases can our standard of living improve. Now there are many ways we can discuss the productivity. Now up till now we discussed about the productivity within the organization, but actually this productivity concept is linked with the macro level, or the overall living standard of the citizens also. Because whenever you want to see that which country is a developed country or the good country, it means that the productivity level of all the organization at the large level, larger scope, that is very good there, and that ultimately increase the standard of living of the different people.
So it is not linked only at the micro level or the organizational level. We also discuss the productivity at the macro level or the larger scope, country wise productivity क्या है, ठीक है, we also discuss about that. So that is the basic question before any country, before any manager, that how can we improve. And that is, if we see especially with respect to the Pakistani scenario, this is the basic question, that how can we improve the productivity, labor, technology, management, all of these things are important as far as the productivity is concerned. So what is the objective of today's lecture? Just you should know the basic concept, that what is the productivity, what is efficiency, what is effectiveness, what is the purpose of management, what is management, by the way. So as I told you earlier that POSCO, that is the abbreviation which was given by Luther Golik, that is planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, reporting, and budgeting. All these are the different activities. There will be the different lecture on each of these important activities. But for the time being, for this particular lecture, I would like to briefly discuss that what is planning, because planning is the first and the foremost activity of management. So in today's lecture, I will just define what is the planning, what is the purpose of planning, and what are the different concepts which are related to the planning. I will discuss these different concepts related to the planning in today's lecture. Then there will be a separate lecture on planning in which we will discuss in detail that what is the importance and what is the concept of planning, how we plan actually. But let me discuss the basic definition of planning or the basics of planning. Now, one thing always you should keep in mind, that planning is usually done for the future. We plan for the future. And future is always risky because we don't know that what will happen in the future. Now again, there are two schools of thoughts about planning. One school of thought says that there should be comprehensive planning, and they spend 2 years, 1 year to 2 years in just planning the things in the feasibility studies. There is another school of thought which says that that planning is just the wastage of time, and we should start. Let's see what happens in the future. But I think the first school of thought is right, that we should have the comprehensive planning because we plan for the future. Now let me a very basic definition of planning, just for the sake of understanding, that planning is actually the roadmap for the future. Again, as I told you, that we do the planning for the future. So it is a roadmap for the future, that how we can achieve the basic or the predetermined objectives of the organization. So of course, every one of you knows the basics of planning, that we plan for the future. But what is the basic purpose of planning? There are many purposes of planning. But when I discuss the planning, I used to say that the very basic purpose of planning is to reduce the risk. Now this is very important. Risk is very important concept. इसको मैं अभी डिफाइन भी करता हूँ, इसको डिस्कस भी थोड़ा सा करता हूँ आज के लेक्चर में. The basic purpose और purpose हो सकते हैं, but the basic purpose of planning is to reduce the risk, because we are talking about the future, and future is always risky. Now let's discuss three important terms which we generally use in management. Just note down these terms. One is the risk, the other one is the uncertainty, and the third one is the certainty. Now let me define very briefly define these terms. Let's discuss about risk. What is risk? Now why we used to say that Shahid Afridi was a risky player? Usually we used to say that he's a very risky player. No, the reason was that there was a lot of variation in his performance. ठीक है, जिस दिन उसका दिन होता था तो वो 10 मिनट में छक्के लगा के फारिग करता था, ठीक है, और जिस दिन नहीं होता था तो पूरा महीना उसका स्कोर ही कोई नहीं करता था. एक चीज, देयर इज अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट व्हेनेवर देयर इज अ वेरिएशन, दैट विल बी ऑलवेज बी रिस्की. Whenever there is a variation, more variation means more risk, less variation means less risk. If you are going to some stock exchange and you want to purchase some stocks,
just purchase those stocks in which there is less variation, because those stocks will be less risky. Now another concept about risk doesn't mean that you will always be loser. You can also get the benefits. शाहिद अफरीदी का जिस दिन होता था तो वो सबको हैरान भी कर देता था और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था और टीम मैच जीत जाती थी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, रिस्क को हमेशा हम नेगेटिव टर्म्स में नहीं लेते, इसको पॉजिटिव टर्म में भी लेते हैं। रिस्क से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। बट एज अ मैनेजर इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क इन द डिसीजन मेकिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now, when I define the risk, there are a lot of ways through which we can define the risk. One of the way to define the risk, that is the difference or the deviation between the actual performance and the desired performance. That is the risk. Again, I am repeating, the deviation between actual performance and the desired performance, that is the risk. Now, can we calculate the risk? Do we have the different measures to calculate the risk? I think you have studied the different subjects like statistics or mathematics में भी हम discuss करते हैं. There are the different terms. You must have listened about the statistical term, that is the standard deviation. Now that is a very basic term which I use to calculate. That is what actually? That is the one of the very basic measure to calculate the risk. ठीक है, we can calculate the standard risk. If I want to calculate the risk of शाहिद अफरीदी, I can calculate the standard deviation of that. That will be basically the risk. एक चीज़ हमेशा याद रखें, whenever there is a greater standard deviation, it means that is the greater risk. The stock which is having the greater standard deviation, that will be more risky, and the stock which is having the less standard deviation, that will be less risky. So one thing which I wanted to tell you, that we can calculate the risk. We can calculate the risk. There are the different measures available through which we can calculate the risk, and standard deviation is a very basic measure to calculate the risk. So one thing should be clear, we can calculate the risk. Now another important thing, when I started this lecture, I told you that management is the scientific study. Now let me define the something about the science. Science is actually one of the way to generate knowledge. There are the different characteristics of science, like आपने पढ़ा भी होगा, research में पढ़ा होगा, in which the science usually starts with the observation, then we hypothesize, then we collect the data, and then we'll have to conclude it or theorize it. That is the basic principle of science. But there is another very important basics of science. Actually, there are the two ways through which we can make the decisions. One is the traditional decision making, ठीक है, which is based on your own experience, in which there can be the biasness, that can work or that cannot work. There is another way to make the decisions, that is on the basis of statistical calculations, on the basis of mathematics, on the basis of facts and figures. So if we are making some decision on the basis of these facts and figures, on the basis of statistics, on the basis of mathematical models, that will be the more scientific decision. So one of the characteristic of science is that we are usually interested to make the decisions on the basis of facts and figures. And always remember that these decisions are always the best decisions, because nobody can challenge these decisions, because you don't have any biasness in these sort of decisions. You have just calculated. Okay? Your boss even cannot challenge these decisions, because these are on the basis of calculations. Now what I wanted to tell you, that the scientific decision making, as far as the management is concerned, is that decision making in which we are interested to take the decisions on the basis of certain facts and figures. Now I just give you the example of cricket and the example of Shahid Afridi. Now suppose you are the coach of cricket team and you wanted to select the team. Now one of the way to select the team is that you say that you have the lot of experience, 15 years experience, and इस player को खिला लेते हैं, इस player को नहीं खिलाते. That is the traditional decision making जो usually हम करते हैं. But if we calculate the average, and if we calculate the standard deviation of each of the players, and by the combination of these averages and standard deviations, if we select the team, that decision will be the more scientific in nature.
Now, why it will be more scientific? Because you have taken the decisions on the basis of certain facts and figures, on the basis of statistical calculations. In that sense, that will be more scientific decision. And in that sense, management is also the science. We are interested in taking scientific decisions. That's why when I was going to define the management, I started that management is the scientific study. So I just gave you the idea that why management is also a science. Now we were discussing about risk, that we can calculate the risk. But suppose if there is a first player who's there is a first international match. If I say you to calculate his standard deviation, then you won't be able to calculate the standard deviation because it's his first international match. You don't have the historical data. So if you don't calculate the risk, or that will be technically called as uncertainty. That is the basics difference or technical difference between risk and uncertainty. By the way, risk and uncertainty that have these similar meanings, but I'm telling you the technical difference between risk and uncertainty. We can calculate the risk. There are the many ways we can use the probabilities. You must have learned probabilities in some of the subject. We can use standard deviation, statistical measures to calculate the risk. But if we are not able to calculate it, then technically it will be known as uncertainty. So I told you that there are the three important terms. Please note down. One is the risk, the other one is the uncertainty, the third one is the certainty. Certainty means if you are 100% sure about something that is happening, that will happen in the future, then you don't as a manager, you don't have to worry about that. You have to worry about the risk and uncertainty. So I just briefly define that what is risk, what is uncertainty, what is certainty, and how that risk is related to planning. Because the basic purpose of planning is to reduce the risk. Okay? There are many purposes, but we plan for the future to manage the risk. And a good decision is that decision which have the calculate. We know the should know the calculations of the risk. What can be the risk in your decision making. So that is important. So why do managers plan? We will discuss the planning in detail in some coming lecture. As I told you that the very basic purpose of planning is to reduce the risk, is to reduce the uncertainty, is to calculate it and to manage it. There are many ways we can manage the risk. In some of the lecture I will discuss about that. Then planning also provides the direction. It gives you the roadmap for the future, that how it should be done, why it should be done, by whom it will be done, how it will be done, and why it should be done. These are the four to five W's of planning which are related to planning. Why it should be done, by whom it should be done, how it will be done, and why and what is to be done. Similarly, as I told you earlier, that planning also helps us to minimize the waste and the redundancy and to be more efficient in that sense. It sets the standards for controlling. That is very important. Controlling is another very important function of or activity of management. For controlling, if we want to check the performance of something and want to compare it, for that you need some standards, you need some benchmarks, and those benchmarks are also set at the time of planning. So we will discuss this concept in detail also, but for the time being you should know that one of the purpose of planning is to set the benchmarks, is to set the standards through which we can control, we can manage the deviation between the actual performance and the desired performance. Planning also promotes the innovative ideas, because in the planning stage you can gather the different scientists, engineers, managers, and you can have a sort of discussion about the future, and through that discussion you can develop the new ideas, innovative ideas, which can be used by the management as well as the organization. It is also helpful in the decision making. As I told you earlier, that it helps us to take the good decisions, to manage the risk. Most importantly, it helps us to take the scientific decision making.
Scientific decision making in the sense that it helps us to take the decisions with the calculated risk. And I have just discussed about the concept of risk with you also. So these are the basic, very basic concepts or purposes of planning, that why should we plan. Okay, class, let's have 10 minutes break. I will not end on this live stream. नमाज का टाइम हो गया है, जिन लोगों ने नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ लें, तो इसी स्लाइड से हम स्टार्ट करेंगे और मैं आपको क्वेश्चन दूंगा दैट शुड बी कंसिडर्ड एज क्विज आल्सो. आप लोगों ने कमेंट्स में उन क्वेश्चन के आंसर करने हैं. सो I will not end the stream, just take the break for 10 minutes, and after 10 minutes please come immediately and we will continue from this slide. We may take the formal break of 15 minutes after the end of the session, or we will continue the session. So let's have 10 minutes break for namaz.
For the time being, I would discuss two important ways to, and we will have the lecture in detail in future about planning. Now, there are two ways to discuss about the types of plans. There are many ways we can discuss the planning, but for the time being, I would discuss two important ways through which we can define planning. One of the way to define the planning is by operation, that is planning by operation. Now, there are three types of plans. One is the short-term plan, the other one is the mid-term plan or intermediate plan, the other one is the long-term plan. If we make the plan for the period of 1 year, that will be termed as short-term plan. It is also known as operational plan. If we make the plan for 1 to 3 years or 5 years, that will be the mid-term plan, or that is the intermediate planning range. If we make the plan for more than 5 years or longer term, then that will be the long-term plan, and that will also be termed as the strategic plan. So as far as the planning is concerned, one of the way to define the planning is by planning, that is by operation. There are three types of plans. Short-term plans means the plan which is made up to 1 year. Intermediate plan or mid-term plan, that is 1 to 3 years or 1 to 5 years, and long-term plan is usually for the long term, that is also termed as strategic plan, or that is made for 5 years and beyond. So this is one of the way we can define the planning, or we can discuss the types of plans. This is very important slide because I'm going to discuss some very important concepts which are not only important with respect to planning, but these are also important with respect to the management as well. I told you that we can discuss the planning in two ways. One is that is planning by operation, short-term plan, mid-term plan, long-term plan. And the second way to discuss the planning is the planning by purpose. So you can see on the screen that there are the different concepts like vision, mission, strategy, policy, rule, procedure, project, and program. All these are the very important concepts with respect to management as well as with respect to planning. You must have listened most of these subjects. So let me explain each of these subjects a little bit in detail. Then in the upcoming lectures, we may discuss each of these concepts in more detail. But for the time being, I will discuss most importantly vision, mission, and strategy, because up to that I have discussed in the class in Odium, which I took in last week. So let's discuss about the vision. What is vision? There are the two ways we can define the vision. One of the way to define the vision is that where you want to see your organization in the near future. Now again, let me repeat, that is whenever with respect to the organization, we define the vision, we say that where you want to see your organization in the near future, यानी आप अपनी organization को near future means after 15 years, after 20 years, किस point पर देखना चाह रहे हैं, that is the vision. So this is one of the way to define the vision. Let me give you an example. I was doing diploma from a Petroman Institute. That was a very popular institute in Pindi, Islamabad. I don't think you must have listened to that institute or not. That was a very basic institute, and I'm talking about the 90s, 94, 95. I was doing diploma in computer applications from that institute. Now that was the time when there was no window. We used to work on DOS. We'll have to type it, and finally, after the lot of typing, you can have the sort of output. Then Windows came in the market, and we were surprised at what happens. We click one thing, and the whole picture is there. So that was the time, and that was the time when computers were very expensive. जिसके पास कंप्यूटर होता था हम कहते थे he is a very rich person. ये वाला टाइम की मैं बात कर रहा हूँ. Now, in that time, I read the statement of Bill Gates in a magazine. I don't know that was a vision or what, but I still remember
2 to 3 lines in which what was written by Bill Gates. Bill Gates ने उस टाइम पे ये लिखा था कि there will be a time in future when the Microsoft software and its related hardware, I will provide it to the every common man in the world. Every common man in the world. यानी उसने कहा था कि जो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड हार्डवेयर है पूरी दुनिया में हर आम आदमी के घरों तक पहुंचाएंगे. अब देखें आफ्टर दिस 15 years और 20 years हाउ दैट विजन इज कन्वर्टेड इनटू द ग्राउंड रियलिटी. आज कौन सा ऐसा घर है जिधर माइक्रोसॉफ्ट यूज़ नहीं हो रहा या उससे रिलेटेड हार्डवेयर यूज़ नहीं हो रहा. तो व्हाट आई वांट टू से, व्हेन यू से दिस स्टेटमेंट ऑफ विजन, देन that most importantly that statement should be converted into the ground reality and the organization used to convert into the ground reality. अगर हम इसकी बिल गेट की और माइक्रोसॉफ्ट की केस स्टडीज पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की, ठीक है, कितनी मेहनत की in order to convert, in order to achieve that vision. And most of us know that Bill Gates is one of the richest person I think in the world, but very rarely people know that not only Bill Gates but his employees are also one of the biggest employees of the richest employees of the world. So what I want to say, that vision where you want to see your organization in the near future, and not only to give the vision is not important, but to convert that vision into the ground reality. That is the basic purpose which should be achieved by the organization. So I told you that there are the two ways we can define the vision. That is one of the way that where you want to see your organization in the near future. There is another way we can define the vision. And what is that way? We say that vision is the intellectual ability of a leader. Again, I am repeating, it is the intellectual ability of a leader. And one of the way we can differentiate managers from the leaders, that leaders always give a vision to his people, to his nation, to his organization, to his nation as well. Now, this is very important. Leaders' characteristics, intellectual ability to foresee the future. Leaders used to foresee the future. That is very important. Now, again, vision of Pakistan was given by Allama Muhammad Iqbal in 1930 in Khutbah Allahabad Desk. कोई जलसा हो रहा था और उसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि देयर विल बी सेपरेट, देयर शुड बी सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी किसी जलसे में, तो अल्लामा इकबाल तो हमारे लीडर हैं और हम कहते हैं कि इस सदी में एक इकबाल आया, उसके बाद नहीं आएगा. सो इन्फ्लुएंशियल वाज द लीडर. लेकिन जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, जो हिंदू के लीडर्स थे हिंदुस्तान के, वो कहते थे ही इज़ मैड, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द इम्पॉसिबिलिटीज़, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो कहते थे. और अभी तक मुझे एक स्टेटमेंट याद है जो हम सोशल स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ते थे, कि नेहरू की जो स्टेटमेंट है, कि नेहरू ने कहा था ये दीवाने का ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा. लेकिन अब इकबाल जो था हमारा लीडर था और हम कहते हैं कि सदी में एक इकबाल आया, उन्होंने स्टेटमेंट दी और पूरी नेशन उसके पीछे लग गई. अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे के बाद उनकी डेथ हो गई और वो जो विजन था जो उन्होंने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया था, दैट वाज कन्वर्टेड इनटू ग्राउंड रियलिटी बाय अनदर विजनरी लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. सो यू सी, एक चीज़, एक स्टेटमेंट जो बड़ी इम्पॉसिबल सी लग रही होती है, उसको वो ग्राउंड रियलिटी में चेंज करके दिखाता है लीडर. एंड दैट्स वाई इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द लीडर टू गिव द विजन एंड टू फाइनली अचीव दैट विजन. और अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान बनने की हिस्ट्री देखें, आप अपने फोर फादर से पूछें तो आपको बताएंगे कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दी. जब हमें तो बना होना है पाकिस्तान मिल गया ना, हम अपने फोर फादर से पूछें तो पता चलेगा हमने कितनी कुर्बानियाँ दी. हमारे अपने फोर फादर्स बताते हैं कि अपने सगे भाइयों को गोली बाज लगी होती थी और तड़प रहा होता था, लेकिन वो कहते थे इसको हमने पाकिस्तान जाना है, हमारे लीडर ने कहा कि पाकिस्तान जाना है. तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये आम लोग लीडर वो नहीं देते विजन. ये लीडर का काम होता है कि अपनी नेशन को, अपने लोगों को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक विजन देता है, and then he used to convert that vision into the ground reality. So we will discuss this concept in the leadership lecture in detail, but for the time being, again I am repeating, there are the two ways to define the vision. One of the way is that vision is something where you want to see your organization in the future. आप अपनी organization को किस जगह देखना चाह रहे हैं, किस बुलंदी पर देखना चाह रहे हैं. And the other way is, it is the intellectual ability of a leader to foresee the future. So that is the basic concept of vision. इसको आपने अपने फिंगर टिप्स पे आपको याद होना चाहिए. जब से आपसे कोई पूछे व्हाट इज विजन,
So you should tell these concepts which I just told you about vision. The second important जो concept है जो भी हम discuss करेंगे, you can see on the screen as well, that is mission. Mission. नो मिशन को जो हम देखते हैं, जिसकी डिक्शनरी मीनिंग आपको आपके जो जेहन में आते हैं वो ये होता है कि गोल, टारगेट टू अचीव. बट व्हेन वी डिस्कस द मिशन इन मैनेजमेंट, its meanings are slightly different from that dictionary meaning. Mission means what is the basic purpose of an organization for doing business. यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या है बिजनेस करने का, दैट इज मिशन. For example, we can say the basic purpose of Ufone is to provide the telecommunication services to the citizens of Pakistan. You know, that is the mission. Yani, what is the basic purpose of the organization for doing business? What is the reason for the existence of the organization? कि वो जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उसका बेसिक पर्पस क्या है. एज आई टोल्ड यू, दैट इज द मिशन. Now suppose similarly, what is the mission of the Pias University or some of the university is to provide the education, engineering or other scientific education to the different citizens at the affordable rate. You know, that is the mission. So basic mission को हम basically define करते हैं. What is the reason of doing the business? What is the reason of the existence of the organization? That is meant by mission. ये मतलब होता है मिशन का. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी हमने डिस्कस किए, यानी विजन को हमने डिस्कस किया और फिर मिशन को डिस्कस किया. Now let me discuss about the strategy. That is again very important concept, strategy. अच्छा, ये देखें कि हमने विजन को डिस्कस किया. विजन जो था विजन जो होता है फ्यूचर के लिए बनाते हैं, प्लानिंग भी फ्यूचर के लिए होती है. एंड दैट सेंस दैट इज लिंक विद द प्लानिंग. इस वजह से प्लानिंग के हेड में इसको मैंने डिस्कस किया. ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक विद द प्लानिंग. प्लानिंग से रिलेट कर रहे हैं, मैनेजमेंट से भी रिलेट कर रहे हैं, प्लानिंग से भी रिलेट कर रहे हैं. और जब भी हम किसी जो मैनेजर है, जब भी कोई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्लान बनाता है, देयर आर द टू वेज. वो कुछ लोग कहते हैं कि आप विजन से स्टार्ट करें, फिर मिशन और फिर रूल और पॉलिसी और प्रोजेक्ट की तरफ आएँ. कोई लोग कहते हैं नीचे से स्टार्ट करें, कोई लोग कहते हैं रूल पॉलिसी से स्टार्ट करें और लास्ट में विजन. तो देयर आर द टू अप्रोचेस व्हिच आर यूज्ड टू मेक द प्रॉपर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान. सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्ट्रेटेजी. अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. व्हाट इज स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी एक चीज़ तो आपने याद रखनी है, स्ट्रेटेजी इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ प्लान. स्ट्रेटेजी भी एक प्लान होता है, बट दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लान. इसको व्हाट आई यूजुअली से दिस इज द मास्टर प्लान और दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. So let me formally define the strategy. Strategy is the master plan or comprehensive plan that how to achieve the basic purpose or the mission of the organization through the deployment of resources. Deployment of resources across the different functions, across the different departments, across the different products and across the different product lines. Again, I am repeating. Strategy is the comprehensive plan or master plan which helps us to achieve the basic purpose or the mission of the organization through the deployment of resources across the different products, product lines, across the different departments, across the different functions. Now, जब भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो इसमें ये भी जरूर देखते हैं कि वो जो हमने रिसोर्सेज किधर से आएंगे और कौन से डिपार्टमेंट को हमने कितने कितने रिसोर्सेज देने हैं. ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी. इस स्ट्रेटेजी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आज डिस्कस करूँगा आज के लेक्चर में. फिर हम जब नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो उसको और भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. बट लेट मी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी इन लिटिल डिटेल. Now, whenever you want to make the strategy, whether it is a human resource strategy or some technical strategy, quality control strategy or financial strategy, तो इसके कुछ components होते हैं. There are some components which are important when you are making any sort of strategy. कोई भी strategy बना रहे हैं तो इसमें बड़े important होते हैं कुछ components. Let me tell you about these components. Now these are the components of strategy.
Again, as I told you, whenever you want to make a strategy, you should consider all of these important components. There are many other components, but these are the most important I will discuss in today's lecture. The first important component of strategy is the scope of strategy. Scope of strategy. Whenever you want to make a strategy, whether it is a human resource strategy or any other strategy, you should define the scope of strategy. What is the scope of strategy? Scope means the depth and domain of the strategy, यानी लेवल ऑफ स्ट्रेटजी. यानी जब भी आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो स्ट्रेटजी आपने किस लेवल पे बनानी है, एंड दैट लेवल डिफाइंस द स्कोप ऑफ स्ट्रेटजी. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्कोप ऑफ स्ट्रेटजी. स्कोप ऑफ स्ट्रेटजी होती है ना, तो थ्री टाइप्स होती हैं उसकी, या थ्री लेवल्स होते हैं स्कोप स्ट्रेटजी के. द फर्स्ट इज द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी. द सेकेंड वन इज द डिवीजन लेवल स्ट्रेटजी. डिवीजन लेवल स्ट्रेटजी और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी भी इसको कहते हैं. The third one is the operational level strategy. Operational level strategy. Now let me briefly define each of these levels. Corporate level strategy का मतलब ये होता है the strategy made at the top level of management. जो आपकी टॉप मैनेजमेंट जो स्ट्रेटजी बनाती है ना, उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी या कॉर्पोरेट लेवल स्कोप है उसका. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी if your company wants to franchise with some other company, now these are sort of decision which is to be decided by the top management or the board of governors, you know. तो ऐसी स्ट्रेटजी हम कहते हैं कि इसका स्कोप क्या है, कॉर्पोरेट लेवल, टॉप मैनेजमेंट बनाती है, ये इसका लेवल है या इसका स्कोप है. सेकंड स्कोप ऑफ स्ट्रेटजी और लेवल ऑफ स्ट्रेटजी इज द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी और डिवीजन लेवल स्ट्रेटजी. इफ यू वांट टू ऐड सम न्यू प्रोडक्ट और यू वांट टू introduce a new course in the university, so maybe not the top management may decide, your your middle management may also decide that what you change at the middle level of management about some course, about some products, if you want to add some product. So this sort of strategy is said to have the scope at the business level strategy or the division level strategy. यानी middle management level पे जो strategy बनती है वो आपकी business level strategy होती है या division level strategy होती है. थर्ड जो स्कोप होता है इसका ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी, और जो आप अपने ऑपरेशनल के लोगों के लिए बनाते हैं, द पीपल हु आर वर्किंग ऑन मशीन्स ऑपरेशंस, उनके लिए अगर कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो दैट विल बी टर्म्ड एज operational level strategy. So in most of the books, these are the three level of strategies: corporate level strategy that is made at the top level of management, business or division level strategy that is made by the middle level management, and finally the operational level strategy that is made at by the direct for the workers which are directly working on the operations. Now when I define the strategy or scope, I say that there are two other strategies or scopes. That is one of the global level strategy or the other one is the individual level strategy. ये दोनों एक्सट्रीम्स मैं बात हुआ इसको थोड़ा सा इसी के से भी बयान करता हूँ. एक होती है ग्लोबल लेवल स्कोप. ग्लोबल लेवल स्कोप मीन्स कि इफ़ यू आर मेकिंग अ स्ट्रेटजी फॉर द होल ग्लोब, मल्टीनेशनल्स जो कंपनीज होती हैं पूरी ग्लोब के लिए अगर कोई स्ट्रेटजी बनाएं तो उसको कहते हैं ग्लोबल लेवल स्ट्रेटजी. अक्सर आपने देखा होगा मैकडोनल्ड का स्टाइल कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सिमिलर स्टाइल यूज़ करते हैं, फिर विद माइनर चेंजेस. ठीक है, उसको कहते हैं ग्लोबल लेवल स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी वो पूरी ग्लोब पे यूज़ कर रहे हैं. एंड द अदर वन इज द इंडिविजुअल लेवल स्ट्रेटजी. नाउ इंडिविजुअल्स आर सो इम्पोर्टेंट that the different organizations used to make the separate strategy for the individuals, for their scientists, for their engineers. So whenever you want to make a strategy, you'll have to define first of all that what is the scope of strategy. Scope क्या होगा वो हमने डिस्कस कर लिया. The second important component of strategy is the resource deployment. That from where you will get the resources. Whenever there is a strategy, in order to implement strategy, you will need the resources. And most importantly, you should know that how to deploy the resources, how to allocate the resources. Again, that is very important component of strategy. And आपको पता होना चाहिए कि वो जो resources हैं, किस डिपार्टमेंट को हमने कितने resources देने हैं और किस डिपार्टमेंट से हमने resources लेने हैं. That should be the very important part of strategy. So resource deployment, as I used this term in the definition of strategy also, this is another very important components of strategy का बड़ा important component है जो हम use करते हैं whenever we want to
make the strategy. So scope, resource deployment, then next important जो इसका component है strategy का, that is competitive advantage. Again, this is very important term. A good strategy will always be that strategy which will be having a sort of competitive advantage. Competitive advantage means any edge over the competitors. Now, all the organizations used to have this competitive advantage. वो कोशिश करती हैं कुछ डिफरेंट करें अपने competitors से, अपने कस्टमर्स के लिए कुछ डिफरेंट चीज़ लेकर आएँ, ठीक है? इसको कहते हैं competitive advantage और any edge over the competitors. That is the competitive advantage. So, a good strategy is that strategy which will having that competitive advantage. Now again, competitive advantage जो है इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में. How we can have the competitive advantage, how we can have the edge over our customers. There can be different sources of competitive advantage, ठीक है? इसमें कुछ सोर्सेज जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ आज के लेक्चर में. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज द टेक्नोलॉजी. दैट इज टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस टू हैव एन एज ओवर द कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस कंपनी ने सबसे पहले कैमरा लगाया था अपने मोबाइल पे, तो दैट वाज हिज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ठीक है, क्योंकि बाकी कंपनीज ने नहीं लगाया था. सो सिमिलरली जो टेक्नोलॉजी है, इट हेल्प्स द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू अचीव द competitive edge, to innovate in their products and in their services. टेक्नोलॉजी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ competitive advantage, बट टेक्नोलॉजी के साथ एक प्रॉब्लम है. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? That no doubt it is most important source of competitive advantage, but it is considered least sustainable competitive advantage. लीस्ट सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि ये सस्टेन नहीं करता ये वाला ज़्यादा अरसे का, स्पेशली आजकल की डायनामिक इन्वायरमेंट में जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है और रोज़ के रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है. सो टेक्नोलॉजी नो डाउट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बट इट इज़ कंसिडर्ड द लीस्ट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. जिस समय भी आपको एग्जांपल दे रहा था कि जिस कंपनी ने सबसे पहले कैमरा लगाया तो वो उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि दूसरी कंपनी ने भी कुछ अर्से बाद लगा लिया, तीसरी कंपनी ने भी लगा लिया. तो वेदर वो जो पहली कंपनी थी उसका वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा? नहीं रहेगा. ठीक है, क्यों नहीं रहेगा? कि उसने दूसरी कंपनी से उसे कॉपी कर लिया, अब उसको एज नहीं रहा ओवर द कॉम्पिटिटर्स. तो वेनेवर जो भी कंपनी यूज़ करती है टेक्नोलॉजी को एज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दे शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि वो कितना अर्सा मार्केट में सस्टेन रह सकता है. और आजकल के इन्वायरमेंट में नहीं सस्टेन ज़्यादा करेगा. स्पेशली आई यूज टू गिव द एग्जांपल ऑफ चाइना. ठीक है, जिधर चाइना होगा या इवन जिधर पाकिस्तान की गुजरांवाला की इंडस्ट्री होगी, तो आप सोचें भी ना कि बहुत ज़्यादा अर्सा मार्केट में वो सस्टेन करेगा. लोग कॉपी कर लेते हैं. नो, कॉपीराइट का एक डिफरेंट इशू है अगर वो ले लें, और अदरवाइज वो वायोलेट भी करते हैं कॉपीराइट्स को. दैट इज़ द डिफरेंट डिबेटेबल इशू. इसको कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में क्वेश्चन हुआ था, वो मेरे माइंड में था. कॉपीराइट का डिफरेंट इशू. अदरवाइज समटाइम्स दे डोंट केयर अबाउट द कॉपीराइट, और वो कॉपी कर लेते हैं. सो नो डाउट टेक्नोलॉजी इज द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बट दैट इज कंसिडर्ड द लीस्ट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अनदर सोर्स, इंपॉर्टेंट सोर्स जो होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, दैट इज मैनेजमेंट स्टाइल. नो अगेन, जैसे मैंने स्टार्ट में भी डिस्कस किया, देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट होती है. वन इज दी सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट. ठीक है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अपनी नॉर्मल की डिसीजन मेकिंग कर रही होती है. दे डोंट लाइक टू टेक द रिस्क. ठीक है, दे डोंट लाइक इनोवेशन. वो कहते हैं कि जैसे रूटीन में चीज़ें चल रही हैं वैसे चलें. दे यूज टू सी द प्रेसिडेंस एंड यूज टू डू द थिंग्स एज द रूटीन मैटर्स. ठीक है, दे डोंट लाइक रिस्क, दे डोंट लाइक इनोवेशन. लाइक पब्लिक सेक्टर, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी द एग्जांपल ऑफ दैट. इसके ऑपोजिट अगर किसी मल्टीनेशनल की एग्जांपल लें, किसी और अच्छी कंपनी की एग्जांपल लें, तो दे हैव द डायनामिक सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, उनका मैनेजर बड़ा डायनामिक होता है, वो डिसीजन मेकिंग में बड़ा एफिशिएंट होता है, इफेक्टिव होता है. दे यूज टू टेक द रिस्क, दे इनोवेट द थिंग्स, दे कैन टेक द क्विक डिसीजंस. ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू टेल यू
कि ये जो मैनेजमेंट का स्टाइल है दैट कैन आल्सो गिव यू द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये भी आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, एक एज देता है ओवर द कॉम्पिटिटर्स। लेकिन अगेन बाकी लोगों को देखें तो वो भी इसको कॉपी कर सकते हैं और थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट स्टाइल को। एक मैनेजर हायर कर सकते हैं और यूज टू इम्प्रूव देयर मैनेजमेंट स्टाइल। Third important source of competitive advantage that is usually considered as the business processes. Business process. Now let me define what is the business process. Business process कहते हैं it is the set of the different input activities have a certain transformation process and give you the particular output. That is the business process. ठीक है? In every organization there are the different business processes. Like in university there are the different processes कि how admission का एक separate process है, like there will be advertisement, then the people will apply, there will be a test, there will be the interview, and finally you will get the admission in the end. That is the so when you see the ad, that is the input. जब आप application देते हैं तो वो input है उस process का, जब आपको admission मिल जाता है तो that is the output. Similarly if you want to cash a check from a bank, that is the process. ठीक है, इसका प्रोसेस है। आप एक चेक देते हैं बैंकर को तो ये इसका इनपुट है, और जब आपको पैसे मिल जाते हैं तो that is the output. Similarly in every organization there are a lot of recruitment का separate process है और different other चीज़ों का separate process है। ये प्रोसेस जो है can give you the competitive advantage. Now इस किस तरह देता है competitive advantage? Let me give you an example. अगर कभी आपको किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में जाने का इत्फाक हो पहली को, तो आप में बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी होती हैं, लोग वेट कर रहे होते हैं और काफ़ी रश होता है। नाउ वी आर द कस्टमर्स फॉर द बैंक। हम बैंक के कस्टमर हैं, एंड मार्केटिंग में हम समटाइम्स कस्टमर को डिफाइन करते हैं कि कस्टमर इज़ द बॉस, और इसी बॉस को हम लाइन पर लगा रहे हैं, 2 घंटे भी ज़ाया हो रहे हैं और आपको अपने ही पैसे जो आपने रखे हुए बैंक में आपको लेट मिलते हैं। इसके ऑपोजिट अगर किसी अच्छे बैंक में आप चले जाएँ, लाइक प्राइवेट और सम मल्टीनेशनल बैंक में चले जाएं, तो उसमें आप देखें एक एनवायरनमेंट डिफरेंट होती है। आपको एक पगड़ी वाला बंदा खड़ा होगा, आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा, एज यू आर द वीवीआई पर्सन, आपको सलाम करेगा सबसे पहले, आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा। आप जैसे अंदर जाएंगे द एनवायरनमेंट विल बी एंटायरली डिफरेंट। शीशे चमक रहे होंगे, कभी आपको रेयरली कोई लाइन नज़र आएगी, सोफ़े पड़े हुए हैं, आप जाके बड़े इत्मीनान से ऐसे सोफ़ों में बैठते हैं जैसे अपने डाइनिंग रूम में बैठे हैं, स्क्रीन लगी होती है, 2 मिनट बाद आपकी बारी आती है और यू कैन गेट दी मनी। नाउ मैं जो बताना चाह रहा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। ये जो बिजनेस प्रोसेस था, ये चेक कैश करवाने का जो प्रोसेस है, लोगों ने थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और इसको री इंजीनियर करके अपने कस्टमर की बेनिफिट में उसको री इंजीनियर किया, उसी चीज़ ने एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे दिया उसको। ठीक है, तो अगेन लेट मी रिपीट, 3 सोर्सेज हमने, बहुत से सोर्सेज हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के, लेकिन मैं जनरली ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज द टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी लीस्ट सस्टेनेबल है, कॉपी हो जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज द मैनेजमेंट स्टाइल, अगेन मे बी सस्टेनेबल and then may be copied by the competitors. Third important sources of competitive advantage is the business process. ठीक है, again मे बी कॉपीड, अब दूसरों को अकल आ जाए तो वो भी इसको कॉपी कर सकते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज व्हाट? लेट्स गेस व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स और द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज़ हमेशा याद रखें, द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, their engineers, their scientists, their managers, these are the most important source of competitive advantage. Why most important? Because these are most sustainable source of competitive advantage. ठीक है, most sustainable. No, why sustainable? Human resource क्यों sustainable है, employees क्यों sustainable है? क्योंकि किसी employee का जो experience है, उसकी जो education है, उसकी ability, उसका skill, उसकी जो education है, उसको कोई दूसरा competitor copy नहीं कर सकता। Again, I am repeating. Human resource is considered the most important source of competitive advantage by any company because their abilities, their experience, their education, their ability, their skills cannot be easily copied by the other competitors. Competitors can offer the higher salary and can, can attract the important employee, but those abilities cannot be created in their own employee. That's why I'm telling you
that human resource is the most important source of competitive advantage. That's why अगर आपने देखा होगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं अपने लोगों पर, कभी अपने साइंटिस्ट को बाहर भिजवा रही हैं, अपनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी भिजवाती हैं, कभी उसको ब्रांड न्यू कार लेके दे रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो है एम्प्लॉय जो उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और या एज अ इन्वेस्टमेंट उसको लेते हैं और ये रिटर्न करेगा आपको. So that is the important source of competitive advantage. So we were discussing about the components of strategy. इसमें जो हमने 3 components अभी तक डिस्कस किए हैं. The first component I was telling you about the scope of strategy. Scope of strategy means what is the level of strategy. There can be the 3 levels, that is there can be the 3 scopes, that is corporate level strategy, business level strategy, or operational level strategy. We also discussed about the global level strategy and individual level strategy. Second important component of strategy is resource deployment, that how to deploy the resources across the different departments and products. थर्ड जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी का कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा. अच्छी स्ट्रैटेजी वही होती है जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है, एज देती है ओवर द कॉम्पिटिटर्स. So third important component of strategy is the competitive advantage. Then most importantly, we discussed about the sources of competitive advantage. We discussed 4 important sources of competitive advantage. Technology, no doubt the most important source of competitive advantage, but least sustainable in today's dynamic environment. Second important source, and that is management style, that may also be copied. Third important source of competitive advantage is what? बिजनेस प्रोसेस. ठीक है, बिजनेस प्रोसेस भी कॉपी हो सकते हैं, बट लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज द ह्यूमन रिसोर्स. इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज मोस्ट सस्टेनेबल कंसिडर होती है ह्यूमन रिसोर्स, एंड दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस है ये कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग अपने लोगों पर. जो फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है स्ट्रेटजी का, that is the goals and objectives. A good strategy should always define the goals and objectives, should always define the desired level of accomplishments. यानी जब भी आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसमें ये ज़रूर डिफाइन करते हैं कि इस स्ट्रेटजी से आपने क्या गोल्स अचीव करने हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं ना. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं इसको भी हम डिटेल में बाद में इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे. अदरवाइज अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर द सेम थिंग्स, और यूजुअली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज स्मार्ट. दैट इज दिस शुड बी स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए. सो दीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट. So fourth component of strategy is that a good strategy should define the goals and objectives to be achieved, should define the desired level of accomplishment through that strategy. ठीक है, ये फोर्थ कंपोनेंट हो गया स्ट्रेटेजी का. लास्ट देयर आर मेनी अदर कंपोनेंट, लेकिन 4 to 5 मैंने लिस्ट किए हुए हैं स्लाइड्स में. लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन the component of strategy is the synergy. Have you any idea about synergy? Now let me give you an example first, then I will define the synergy. Synergy, sometimes when we define the synergy, so I usually say that it is the aggregate impact of something. Aggregate impact of something is always greater than the sum of the individual impacts. Sum of the individual. इसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो बचपन में सुनते थे कि वो ना एक बाप अपने बच्चों को जो था एक वो स्टोरी सुनाता है जो आपस में लड़ते रहते थे. तो एक दफ़ा वो, लेकिन वो सुनते नहीं थे, आपस में फिर भी लड़ाई वगैरह करते थे. तो एक दफ़ा उसके जहन में एक चीज़ आई, उसने अपने बच्चों को बुलाया, लकड़ी के डिफरेंट जो हैं वो स्टिक्स इकट्ठी की. अब एक एक स्टिक उसने सबको बच्चों को दे दी कि आप इसको तोड़ो. बड़ी आसानी से सब बच्चों ने अपनी अपनी स्टिक तोड़ ली. उसके बाद उसने क्या किया, सारी स्टिकें इकट्ठी करके उसको बांध दिया इकट्ठों को. अब उसको कहा कि इसको आप अलग-अलग तोड़ो. ठीक है, तो वो नहीं तोड़ सके क्योंकि वो ज़्यादा थी, और मिल के उन्होंने फिर तोड़ दी. तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि जो एग्रीगेट इम्पैक्ट होता है किसी भी चीज़ का हमेशा बहुत अच्छा होता है रादर देन द इंडिविजुअल अगर आप काम कर रहे हो. तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड साइनर्जी. को समटाइम्स हम कहते हैं कि 2 + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 5.
और डेट इज इक्वल टू 22, दैट इज द सिनर्जी। नाउ सिनर्जी का जो वर्ड है हम टीम वर्क के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, टीम वर्क। यानी जब भी आप एज अ टीम काम करते हैं ना, तो उसका जो उसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। यूजली हम क्रिकेट के बारे में कहते हैं कि अगर आपने क्रिकेट का मैच जीतना है तो आपकी बैटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, बॉलिंग भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी फील्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। आउट क्लास बेशक ना हो, ठीक है, लेकिन आपकी बैटिंग फर्स्ट क्लास है, फील्डिंग आपकी थर्ड क्लास है, देन देर विल बी द लेस चांसेस ऑफ टू विन द मैच ना। उसकी रीज़न क्या है? अगर ये तीनों चीज़ें आपको एक हद तक सपोर्ट करें ना, तो एक एग्रीगेट आउटपुट होता है जो आपको मैच जिता देता है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सिनर्जी। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हम टीम वर्क एज अ काम कर रहे होंगे, एज अ टीम काम कर रहे होते हैं, तो उसका आउटपुट हमेशा अच्छा होता है। नो, हाउ इट इज़ लिंक टू दी स्ट्रैटेजी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनानी है वो ऐसा स्ट्रैटेजी हो जिसमें सिनर्जी हो, ठीक है। लाइक अगर आप ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो वो ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रैटेजी का किसी के साथ, लाइक डिपार्टमेंट एडमिन के साथ, आपके अकाउंट्स के साथ या किसी और टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ कोई क्लैश ना हो, ठीक है। अगर वो क्लैश आ रहा है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है लेकिन किसी और पर्सपेक्टिव में वो अच्छी नहीं है, तो दैट विल इट मीन्स द सिनर्जी इज़ नॉट देयर, ठीक है। इसको डिटेल में फिर अभी कभी डिस्कस करेंगे। तो ये मतलब है स्ट्रैटेजी का कि अ गुड स्ट्रैटेजी दैट्स इज दैट स्ट्रैटेजी इन विच देयर विल बी दी साइनर्जेटिक, अगर उसमें इम्पैक्ट होगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज दी गुड स्ट्रैटेजी। तो ये सिनर्जी का कंपोनेंट जो है दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रैटेजी। सो क्लास एक कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर रहे थे बिकॉज वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्लानिंग बाय पर्पस। उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, लाइक विजन को हमने डिस्कस किया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मिशन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया कि स्ट्रैटेजी क्या है। देन वी डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की सोर्सेज क्या होते हैं, उसको हमने डिस्कस किया। आई एम होपफुल कि आपने कुछ ना कुछ नोट डाउन भी किया होगा चीज़ों को, बिकॉज आई एम गोइंग टू आफ्टर 5 to 10 minutes आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, यू विल हैव टू आंसर इन दी कमेंट सेशन, ठीक है। इसके नंबर भी होंगे, ये किस्म का क्विज होगा। और स्पेशली अगर लास्ट क्लास आप लोगों ने अटेंड नहीं की जो मैंने ऑडियो में ली थी, तो इस पे आप ज़रूर इस पे वो कमेंट दें अपना क्विज, ताकि वो अटैम्प्ट हो जाए। सो वी हैव डिस्कस अबाउट विजन, मिशन एंड स्ट्रेटजी। पॉलिसी रूल, और ये हम लास्ट नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे जब आपका डिसाइड हो जाएगा कि वेदर देयर विल बी ऑनलाइन कैंपस क्लासेस होंगी या ऑन दी कैंपस क्लास होगी। और लेट्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, स्कोप, रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, सोर्सेज ऑफ कम्पेटिटिव एडवांटेज एंड दिस सस्टेनेबिलिटी। तो ये आपने हमने आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट जब भी हम कम्पेटिटिव एडवांटेज देते हैं विल हैव टू डिस्कस अबाउट दिस सस्टेनेबिलिटी, कि वो कितना सस्टेन कर रहा है कम्पेटिटिव एडवांटेज में। इसमें हमने डिस्कस कर लिया टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्टाइल, बिजनेस प्रोसेसेस, और लास्ट इंपॉर्टेंट HR हाईलाइटेड बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्पेटिटिव एडवांटेज। और ये आपको बताता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है और एम्प्लॉयज़ की इंपॉर्टेंस क्या होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्पेटिटिव एडवांटेज फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये कॉन्सेप्ट्स मोस्टली आई हैव डिस्कस्ड। पॉलिसी, रूल, स्ट्रेटजी को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर को भी, मिशन को हमने डिस्कस कर लिया, द रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, और a clear statement of purpose, that what is the purpose of the organization, what is the reason for its existence, ये हमने डिस्कस कर लिया। विजन को हमने डिस्कस कर लिया कि where you want to see your organization in the near future, and we have linked this concept with the leadership, that how the leadership will give the vision to the organization, or how important that concept is for the leaders. Elements of strategy, I think that slide is being repeated, इसको हमने डिस्कस कर लिया। सो विजन, मिशन अगेन हमने डिस्कस कर लिया। स्ट्रेटजी इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, और इसको जो मैंने आपको डिफाइन किया था कि द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और द मास्टर प्लान, हाउ टू अचीव द बेसिक पर्पस और द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शंस एंड प्रोडक्ट्स, इसको हमने डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हैं, पॉलिसी, रूल, प्रोसीजर, प्रोजेक्ट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट स्लाइड for today's lecture. Thanks for listening and thanks for your patience.
ये मुझे पता है ऑनलाइन क्लासेस लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वन वे कम्युनिकेशन होती है, बट मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम टू वे भी करें और कुछ तरीका करें। आपके क्वेश्चंस मैं कमेंट सेशन में देखता रहूँ। नाउ लेट मी गिव यू सम क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को अभी आपने जो है आंसर करना है। ओके क्लास, ब्रीफली डिफाइन एंड डिफरेंशिएट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। मैंने बार बार रिपीट भी किए कॉन्सेप्ट्स के। आई एम होपफुल आप लोगों ने सुना भी है, उसको नोट डाउन भी किया होगा। जो कॉन्सेप्ट्स आपने डिफाइन करने हैं, दैट इज द विजन एंड मिशन। अच्छा, इसको कमेंट्स में आपने आंसर करना है, रिप्लाई इन द कमेंट सेशन, और इसको ब्रीफली आपने बताना है विद इन 1 to 2 लाइन्स, दैट विल बी एनफ। जो हमने डिस्कस किया, जो भी आपको समझ में आया उसको आपने अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है। विजन एंड मिशन क्या होता है, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, 1 2 लाइनों 3 लाइनों में आपने बताना है। सिमिलरली एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस क्या होता है, इसको भी जस्ट 1 to 2 लाइन्स में कमेंट सेशन में डिफाइन करें। मैनेजमेंट को भी 1 2 लाइनों में, बेशक एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको याद ज़रूरी नहीं हो, जो भी आपको समझ आया है कि मैनेजमेंट क्या होती है वो आप डिफाइन करें, और स्ट्रेटजी क्या होती है, और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, या कंपोनेंट्स अगर याद हैं तो कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर लें। तो ये आपने 4 to 5 लाइन ने सब ने कमेंट सेशन में इसको आंसर करना है। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ हो जाएगा, बट स्टीम विल आई विल एंड दी स्ट्रीम आफ्टर 10 मिनट्स। तो आपने 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने। आफ्टर दी 10 मिनट्स आई विल एंड दी स्ट्रीम। तो 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपने आंसर करना है, उसके बाद दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। 10 to 12 मिनट्स में आपको दूंगा। आप लोगों ने अपने नाम ज़रूर लिखें। प्लीज़ राइट डाउन योर नेम व्हेन एवर यू आर रिप्लाइंग इन दी कमेंट सेशन। नाम लिखें, और जस्ट आपने इन सब कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफली, वेरी ब्रीफली डिफाइन करना है, बिकॉज यू विल ओनली गेट 10 to 12 मिनट्स। तो प्लीज़ स्टार्ट, कमेंट सेशन में स्टार्ट कर दें, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्ट्रीम एंड हो जाएगी। और आज के दिन के लिए मेरे लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।